Okay, we will start with a few verbs. The first one is CROIRE. CROIRE, croa. So we will start with we will do a few verbs today. We have already done the basic verbs like manger, parler, uh, and what else? Ale, venir. Uh, we have done a few more. I don't remember. Vulu and all. Voa, then vuluar. Vuluar means to want, and voa means to see. Yes. Okay. Next verb is CROIRE, croa, which means to believe. Okay. Croa means to believe. If you are using a phone, please take a screenshot of this, and later on, please copy this. But do not copy all them. You just need to copy the first column, which is present, and the third column, which is passé composé. Okay, so for the time being, you just need to copy the first column and the third column. You please copy it after the class in your French copy. The first is croa. Okay, कौन read करेगा? सबसे पहले Vivan, you read. Read the present column. Yes, sir. Présent. Z- Je crois. Je crois, tu crois, il, elle, तू नहीं, tu. tu crois. Il, elle, on croit. अच्छा, il मतलब he, she, I have told you. On is basically used for like one. जैसे अगर हम बोले one believes, हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, one believes that. Understood? तो like one या someone, तो उसके लिए on आता है कभी. On is basically not he or she, it's like one or someone. So that is also used for the tense usages similar to the usage of il and el. So it is again croa. Croa, croa, croa. Je crois, same pronunciation, but spelling is different. The first two is CROIS, CROIS, उसके बाद CROIT. मतलब if we have to say I believe, it will be je crois. You believe, tu crois. He believes, il croit. She believes, elle croit. Okay, continue from there, Vivan. Sir, croa means believe. हाँ, देखो हाँ ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है to believe. Believe, yes. Il, Okay, elle, Vivan, continue. nous croyons. Croyant, croyant. Nous Okay, then croyons, vous croyez, croyez नहीं, लास्ट का z क्यों प्रोनाउंस कर रहे हो? croyez. croyez. Yes. Il, elle, croyant. ना ent प्रोनाउंस नहीं होगा ना लास्ट का. Crow. जो लास्ट वाला होता है नॉर्मली वो फर्स्ट की तरफ प्रोनाउंस होता है. So do not pronounce ent. It will also be croa. Sir, Il croa, el croa. Yes. so can you again repeat no, wo, and illals? I forgot. You tell me, Vedika. तुम एक बार शुरू से read करो. Vedika, read the entire first column. Sir, je crois, tu crois, il, elle croit, nous croit, Croyant. croyons. नु के साथ हमेशा ons लगता है. I think अब तक तुमको पता होगा ना. अब तक we have done so many verbs. तो you will find that सब में नु के साथ ons लगता है और वो के साथ ez लगता है. ये तो एक नॉर्मल फीचर है. So nous croyons means we believe. Okay? And vous croyez means, Vedika, vous croyez means? I don't remember What is vous at croyez? all. What do you mean I don't remember? Vous का मतलब how can you forget? vous का मतलब क्या है? VOUS? vous मतलब क्या हुआ? Dharya, tell me what is vous? VOUS? Dharya, can you tell me? So it will Yes. be formal you. 1 second. What is Dharya? Dharya, what is vous? VOUS? Sir, who means you? Then what is the difference between, Dharya, what is the difference between tu and vous? Sir, tu and vous. Sir, tu is an informal you and woo is a formal you. What do you mean by informal and formal?
So formal means that we are saying to someone who is respected, and informal is that which we are saying to our friends and our friends. Okay, good. So basically, if you are speaking to suppose your friend or somebody who is your equal of your age or your rank, then you say tyu. मतलब तुम. लेकिन अगर आप बोलना है, if you are talking to an elder, then you say वो. Or if you are talking to somebody whom you do not know well, then you say वो. इसके अलावा if you are using plural, जैसे कि अगर तुम किसी if you are talking to 3 people, तो हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग यू ही बोलते हैं, यू ऑल, यू ही बोलते हैं. हिंदी में भी यही बोलते हैं, तुम लोग सब या आप लोग सब. तो if it is plural and you are referring to multiple people, then also you say वो. And the last one, Vedika, continue. Sir, il croa. Ilal croa. So ilal means, Vedika? They. They. So what is the difference between ILS and ELLES? Sir, it might be as in if you are referring to only males, it should be and if you are referring to only the girls group, then it will be L. Okay. So ILS is like a bunch of male people, they, but male they. And ELLES is female they. Okay. So this means that they believe. Okay, they believe, and then you make the sentence like they believe that. Agar bolna hai, then you say QUE. They believe that. Suppose now do one thing. Write a sentence. Take out your copy, everyone. Write a sentence. Translate this in French. Write the English one like. I have a question. Yes. Sir, Shobita, here yes. in present, il and slash on croa. What is the meaning On. of on? It is o, not on. O. O means like if in English we say that one believes that, okay, or one should believe that. Understood? Sometimes we do not say he or she. We say that one can go like this. One can believe this, or one believes. So when we use one or someone, then we say on. Okay. Okay. Write a sentence, a simple sentence. Try to translate it. My brother believes that my brother believes that he is my brother believes that he is Aruko. My brother believes that I am sad. Okay. My brother believes that I am sad. Okay, try to translate it. The meaning of the word sad, which means, can anyone tell me what is sad? किसी को याद है? Sad. Mal, MAL. No, mal is bad. Sad is trist. I have sent you. Sad is trist. TRISTE. TRISTE. Now please translate the sentence in French and send it to me in the chat box so that I can check your spelling and grammar. So for that, what will we write? QUE. QUE. Okay. So which sentence do we have to translate?
I told you ना, वापस से बोल रहे हैं. My brother believes that I am sad. My brother believes, please copy it. My brother believes that I am sad. SAD, sad. Dukhi. My brother believes, please copy it in English. My brother believes that I am sad. Translate into French without taking help of any Google or anything. Fine. Vivan, okay. It is right. बाकी लोग सेंड करो. What is the meaning of that? QUE. Q. QUE. So, वेदिका ठीक है. शोमिता ओके करेक्ट. वेदिका करेक्ट. धैर्य करेक्ट. Okay. So the answer will be my brother is Mo, MON Mo. Frere, FRERE. MON Mo, FRERE. Frere, in the first E there will be accent half. Then Croat, CROIT. My brother believes that, QUE. Je suis, I am. Je, JE. Je suis, I am sad. Je suis triste. And हाँ रोहन, just फ्रेयर में first E के ऊपर there will be grave. Okay. Then Dum dum. write one more sentence. We believe we believe that we believe that the bed, BED, we believe that the bed is very large. 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 Everyone remember? Vivan, tell me the French for bed, BED, bed. Sir, I am also thinking that. Acha, Shomita, remember? BED, bed. The Lee, something like LIT, something like that. LIT, yes, LIT, which is Lee, pronounced as LIT, pronounced as Lee. T is silent. So the bed will be LE, 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 the bed. ठीक है तुम्हारा धैर्य. फाइन. इसको क्या बोलते थे फ्रेंच में? किसको? Bed is LIT. Bed is LIT. And big is GRAND. That is QUE. अभी तो किए थे. हाँ, QUE क. We believe nous croyons que. CRIS क्यों होगा विवान? ये तो V है ना, तो croyons हो जाएगा. nous croyons नहीं, CROIS नहीं होगा, CROYONS, because nous के साथ लग रहा है. So we believe is nous croyons que that
the bed, le lit, is est a thre, tres e के ऊपर graph and grand, घोंद. ठीक है, fine. So the correct answer is, रोहन समझ गए? ये करेक्ट आंसर है. वी बिलीव दैट nous croyons que le lit est est très grand, très grande, très grand. Okay, so bed is lit. हाँ, tres थ्रे में घ्राव लगेगा, not ego. Okay, come back to the screen. So this was present tense, which is how you say CROIRE in present form. Now go to past tense, which is third column, passé composé. So in the third column, I told you the rule of passé composé, the basic rule. This is the basic rule. There are some exceptions. The pronunciation is nous croyons que le lit est très grand. It will be grand. It will be grand if there is an E after D. So there is no E here. So this will be grand. Then come to passé composé, which is a past tense, which is like believed. I believed, you believed. Okay, Dharya, read it once. Read this column. Third column, passé composé. Yes, sir. J crew to a crew. तू नहीं, त्यो. Crew. L O a crew. नहीं, आ. A You have to crew. say आ. Nous avons crew. Nous avons मत बोलो, nous avons होगा. हमेशा याद रखो. We always say nous avons. Nous avons crew. Zavier नहीं, avons. Nous avons. Vous avez crew. Vous avez है, ठीक से देखो ना. Nous avons, vous avez. Il, elle, o crew. को भी छोड़ दो, अभी इल पे फोकस रखो. इल crew. Okay. So here you find that the rule of passé composé is that we are using after je or tu or il or nous, we are using the avoir. उनका जो avoir था, which is ai या as, a, avoir use करेंगे. avoir के बाद we will use there is a suffix that comes, which means this is the past participle verb, the word for passé composé, which is the same for all the words, that is crew. So you just need to remember crew. You do not have to memorize this column. You just need to memorize that for croix, which means for croix, the passé composé participle is crew. Okay, so whenever you have to say something, like if you have to say we believed, then we का तुमको पता है nous होगा. You will write nous. After nous, you will write the avoir for nous, which is avons. So nous avons, and then you will write crew. Understood? You do not have to memorize the entire column. जो present tense है उसमें you have to memorize the entire column because all the words are different. There is CROIS, CROIT. So all the words are different. But in passé composé, we never memorize the entire column. You just need to memorize the participle or the last word which is coming. So it is crew. Then you make it up. Subject लिखो, I या he या you. जो भी subject है उसके बाद उसका respective avoir लिख दो and then crew. Understood? So if it is they believed, तो वो हो जाएगा il and then ont, il, on and then crew. All right? Now write a sentence, English sentence. My friends believed that
my friends believed that mm, 1 second. For example, my friends believed that time is money. Okay, my friends believed that time is money. My friends believed that time is money. Sir, can you repeat what do you say time and money? Time is money. 1 second, I'm showing you. My friends, okay, believed. So this is, as you can see, past tense. Okay, my friends believed that time is money. Now try to translate it slowly. Sir, can you once say what do we say time and money in French? टाइम को हम लोग आवर भी बोलते हैं या फिर TEMP बोलते हैं. इट्स लाइक ल TEMP. तुम. मनी के लिए 3-4 वर्ड है, बट ये वाला वर्ड यूज करो, ल ARGENT. लेकिन क्योंकि ये 2 वावल एक साथ आ रहा है तो ये एक्चुअली इस तरह से लिखा जाएगा. एल लिखोगे, ई और एक साथ नहीं लिखोगे. इंस्टेड Sir, ऑफ will ई it यू be विल like राइट, this? हाँ, अपोस्ट्रोफ देके लार्जॉन. लार्जॉन हम लोग पहले किए हैं, आई गेस. ओके, सो Sir, is my right? शो इट अगेन. कैमरा वहां पर ले जाओ. So no, sir, I send it in your chat in the chat box. अच्छा, ओके, 1 सेकंड, लेट मी चेक. सो माय फ्रेंड्स का हो जाएगा मेजामी. ओके, माय फ्रेंड्स विल बी मेजामी. हाँ, तो क्योंकि माय फ्रेंड्स है ना तो MES हो जाएगा. विवान रॉन्ग हो रहा है तुम्हारा. धैर्य तुम्हारा भी रॉन्ग हो रहा है. क्या रॉन्ग? यहाँ तो बिलीव्ड यूज करना है तुमको. तो देखो, माय फ्रेंड्स सपोज मेजामी. अगर सपोज इट कैन बी मेजामी, और if your friends are female then you will say AMIES. okay, my friends. believed के लिए हम बोले थे तुम्हें पहले पास्ट टेंस है तो फर्स्ट तुम इसका अवॉयर यूज करो. my friends का मतलब क्या हुआ? बेसिकली दिस इज लाइक दे. अंडरस्टूड? ये दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल. सो यहाँ पे अवॉयर होगा ONT. माय फ्रेंड्स तो इसकी तरह हो गया ना, ILS की तरह या फिर ELLES की तरह, बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन माय फ्रेंड्स एंड प्लूरल में है ये. तो इसका जो अवॉयर यूज होता है विच इज ONT वो लगेगा. समझ में आ रहा है ये चीज? धैर्य, इज इट क्लियर? No, sir. सी, बिलीव्ड के लिए आई टोल्ड यू पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का रूल क्या है? पास्ट टेंस का रूल है, वेदिका तुम्हारा भी रॉन्ग हो रहा है, सब्जेक्ट लिखोगे पहले. अभी तुम लोग वही करो जो हम करा रहे हैं. अगर तुम लोग गूगल से ट्रांसलेट करते हो तो वो दूसरा रूल आ जाएगा. प्लीज उसको वो चीज मत करना. सब्जेक्ट लिखो. सब्जेक्ट लिखने के बाद यू विल राइट अवॉयर हियर, विच इज अवॉयर जो हम लोग पहले किए थे. आफ्टर दैट द past participle which is in our sentence it is crew. हम लोग जो कर रहे हैं क्रोआ का पास्ट पार्टिसिपल क्रू है. ठीक है, उसके बाद आगे का सेंटेंस. तो माय फ्रेंड्स बिलीव्ड में मेरा सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स. सो माय फ्रेंड्स का हम लिखेंगे मेजामी.
मेजामी, एंड अगर फीमेल फ्रेंड्स है तो फिर AMIES, मेजामी। अब तुमको अवॉयर लिखना पड़ेगा, इसका अवॉयर होगा ONT, and then past participle is crew. So this part reads my friends believed. Okay, ये believed के लिए ये आ रहा है पूरा. You will not read it as my friends have believed. You will say my friends believed. Okay, my friends believed. अब उसके बाद क्या है? That time is money. तो time के लिए तुम लोग हमेशा ल तो लिखोगे. You will not only write TMP, you will write LETEMP. Like I told you कि हमेशा article आएगा इसके साथ. तो only TEMP नहीं लिखोगे, ल तो लिखोगे. ल तो LETEMP. This is for time. I repeat, you will not write TEMP, you will write ल तो. और ये टाइम्स मत लिखो, डोंट राइट एस. धैर्य एस मत ऐड करो, एस नहीं होगा, जस्ट एस होने से वो LES हो जाता. फिर वी आर इन एनी केस सेइंग टाइम, सो इट इज ल तो एंड देन इज मनी, सो EST, द टाइम और टाइम इज मनी. मनी के लिए अगेन हट, मनी के लिए होगा L, मनी के लिए होगा L apostrophe ARGENT. अगेन मनी अकेला नहीं आएगा, वो द मनी के द के साथ आएगा. लाइक आई टोल्ड यू, टाइम या मनी हम लोग जब लिखेंगे तो उसके साथ ल या ला आएगा. सो ल तो द टाइम इज द मनी, इस तरह से लिखते हैं फ्रेंच में. तो ल तो ए लॉजॉन, लाजॉन, L apostrophe ARGENT, फुल स्टॉप. सो मेजामी सॉ क्रू क ल तो ए लाजॉन. सी ये क्लियर हुआ सबका? धैर्य तुम्हारा क्लियर है? रोहन तुम्हारा? वेदिका? सर हाँ सर. शोमिता? Yes, sir. But I can't hear the sentence. Read this. Shomita, read this. Oh, sir, I can't see the sentence which is written there. You cannot see the screen? No, sir. Means it's showing here blur. Means light Blur is माने? reflecting. That's why. Now I can see. Mezami Okay. or crew हाँ Q क ko ka la tim ल तो la to A EST तो. yes. Sir, what is the pronunciation of money? Loj. L'argent. 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 Is this clear? So Yes. mes amis sont cru que le temps et l'argent. So is this clear how you are So translating can you it? again repeat the pronunciation of the time wala part? You repeat the sentence, Vedika. You read it and then I will correct you. So mezami. Mes amis. Yeah, mezami. Oh. अच्छा, one thing है, don't say on, say on. Okay, एक होता है ना कि like there are two words, एक होता है on और एक होता है on. फ्रेंच में on कभी आएगा ही नहीं बेसिकली, हर बार on ही आएगा. Okay. Like जैसे तुम SONT बोलोगे तो सौ मत बोलना, सो बोलना. समझ में आया? SONT को don't say song like this, you say song. इस तरह से. Mezami. O. Crew. Ka. ल तो No, I don't. That time part. What was the pronunciation? LE ल La. और उसके बाद TEMP का I don't know. तो Okay. La. हाँ. To. A larger. L'argent. Yeah. Okay. Okay. So was that your dog? Hi. What dog है ना? Was नहीं, is. अरे नहीं, वो चला गया था कैनवस. रुको, बैठ गया है. 1 second.
Okay, so this is how this sentence will be translated. What I'm trying to say is that you will need to know avoid properly, unless otherwise you cannot do past tense. एक बार avoid फिर से देख लो. avoid में क्या क्या था? avoid में क्या क्या था? अच्छा रोहन बोलो, य के साथ क्या आता है? उफ, रोहन य के साथ avoid कौन सा आएगा? What? रोहन य के साथ avoid कौन सा आएगा? धैर्य त्यू के साथ avoid कौन सा आएगा? सर सुमिता ज इल के साथ क्या आएगा? सर AI जिसको जो पूछना है वो बोलो. हमको क्या पूछा आप? तुमको कुछ नहीं पूछे. विवान नू के साथ क्या आएगा? वही तो AVONS आवो. ओके. धैर्य वो के साथ क्या आएगा? सर Oh. सर ज के साथ क्रॉय आएगा ना? नहीं, अवॉयर बोलो पहले. अवॉयर मतलब वो टू हैव वाला जो हम लोग पहले कर चुके हैं एकदम फर्स्ट सेकंड क्लास में. जैसे एत्र में क्या होता है? एत्र में हम लोग क्या करते हैं? य आई एम करते हैं, य स्वी. और अवॉयर में क्या करते हैं? लाइक टू हैव, आई हैव. तो आई हैव को कैसे लिखते हो? रोहन आई हैव को कैसे लिखते हो? जस्ट हुई वो तो आई एम हुआ. आई हैव को कैसे लिखते हो शोमिता? आई हैव. Ja. सर J. J-A-I. J. J means we will write like J apostrophe and then AI. So J. Okay. धैर्य त्यू के बाद Yes, sir. you have को क्या बोलोगे? त्यू. Oh. So can I say? You say the next one Vedika. इल का. वेदिका ये वाला बोलो, इल वाला. धैर्य त्यू के बाद क्या आएगा? You have को कैसे लिखोगे? और यहाँ पे Sir, क्या he इल has को आ. कैसे लिखोगे? इल आ. But तो you he has के लिए avoid. इल आ. नहीं अवॉयर नहीं, अवॉयर का तो अवॉयर तो कॉमन वो तो नाम है इस टेंस का. त्यू के साथ एएस आता है. यू हैव, त्यू आ, इल आ. वैसे वी हैव के लिए nous avons. Savyam, are you able to speak today? I don't think so. शोमिता ये वाला बोलो. वो, VOUS. Vous avez. Vous So this is avez. you have, vous avez. A-V-E-Z. Yes. Okay. This one again. You say. Shomita, you say. Okay. O. O-N-T. O. जो हम लोग अभी किए. So Yes. which means whenever you are using third person in plural form, like they or my friends or my dogs, whatever, but third person in plural, then you say, you use this part. Okay, if you have to say I believed, then you will say je with avoid, which means you will say je. You will say je. And then crew. If you have to say we believed, then obviously you will say, first you will write nous avons, which is avoid, sorry, which is a nous and then avoid, and then crew. So crew will come all the time after these two or these two or these two or these two or these two. Yes. So why is it news? Wait, it should have been we have. Believe something like that. Vuzavo. Then only Which it should one? come right. No Zavo. It's for Zavo. It's for have. So it should be we have believe. हाँ आई एम हाँ, लेकिन फ्रेंच में ऐसा रूल है कि अगर पास्ट टेंस यूज करोगे तो nous avons को तुम सिर्फ इसको देखो, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है. दिस इज द डिफरेंस. समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू ट्राई टू डू वर्ड बाय वर्ड. इसका ट्रांसलेशन बी है, इसका हैव है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड नहीं करना है. तुमको सेंटेंस बाय सेंटेंस या पार्ट बाय पार्ट करना है. तो इन फ्रेंच इफ यू नोटिस
that there is crew, then this will automatically become we believed and not we have believe or something. Understood? nous avons कब यूज होता है, we have कब यूज होता है अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि सपोज अगर मुझे बोलना है we have a dog, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, न कि वर्ब. तो इन दैट केस तुम इसको इस तरह से यूज करोगे we have a dog. लेकिन अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, if there is no object here but there is a verb here as in CRU, crew, then you will not translate this as we have. Is this clear? If there is for instance, nous avons, acha, Vedika, what is, I want to say we ate. Now tell me यहाँ क्या लिखे हम, क्या लिखे यहाँ पे हम, Vedika, quickly. Vedika, what should I write here if I want to write we ate? Yes, sir. So, Vivan? nous avons mangé. Vivan, what should I write here? We ate अगर लिखना हो तो? Sir, we ate. So, बोला तो हाँ. nous avons mangé. हाँ, I will come back to you. Vivan, क्या होगा इसका आंसर? Sir, nous avons mange, mange, and that. So What argue. that? That मतलब क्या? ये तो क्या है ये? Argue. एगू. हाँ. Ego. तो मौज नहीं होगा, मौजे हो जाएगा. So इसमें क्या था कि most of the verbs which are regular ER verbs. Okay, ER verbs means verbs which are ending with ER. The basic regular ER verbs जैसे PAR, LER, to speak, to eat. और भी थोड़ा बहुत है जैसे to pay है, लेकिन हम लोग कौन कौन सा किए हैं? We have done I think these two verbs which are ER verbs. इसमें जो general rule है, when you want to find out the see, it is not possible to memorize the past participles of thousands of verbs. So ER regular ER verbs का ये rule है that if you want to find out the past participle जो past tense में use होगा, तो you remove the R. Okay, you remove the R. यहाँ पे भी remove the R. Remove the R. And then add an egu above E. Add an egu above E. Is this clear? So if you have to say we spoke, तो इसका होगा nous avons parlé. Okay? ये समझ में आया धैर्य? रोहन, सव्यम? Sir, can you say it again? हाँ, that is what I am saying कि अगर ये ER verb है like PR, LER या MANGER, parlor और measure, तो यहाँ पे तुमको इसका past tense अगर निकालना हो, you will remove the R, it will become PARLE, and then above E you will put an egu. Like here also, remove the R, write till E, above E put an egu. Egu put करने से difference क्या होता है? Difference becomes in pronunciation. Pronounce these two, Shomita. Pronounce the two words. Parler, manger. No, this and this. Oh, This and this. okay. Mange, manger. Okay. So the difference is that if there is no accent over E, then E will not be pronounced. You will pronounce it as mosh. But if there is an accent over E, then you will pronounce it manger. Now there are two accents, like one is something like this, egu, and one is grav. Now this word does not exist, but how will you pronounce it? Okay, Shomita bolo, difference, pronounce these two words. In first case, the E will be pronounced manger, and in second case, E will be not pronounced. No, E will here be pronounced also. In this case, I am putting an accent though. Why it will not be pronounced? Okay, okay, sir.
How do you pronounce this word? Pronounce this word. Three. Hai. See, this is A. Okay, when there is this accent, then I'm pronouncing it as A. Okay. Okay, A. But when there is this accent, I will pronounce it as A. How do I write A? A cannot be written in English. A. So like this is not three, it's thre. Three. Like this. Très bien. Okay, très. So this is manger, and this word does not exist, but it will be pronounced as manger. Manger. Understood? Like in my brother, this is wrong word. This is frère. Frère. But frère nahi hai. वो है frère. Frère. It's not frère. Okay, it's not frère. It's frère. Like my mother. My mother को कैसे लिखोगे? Mom ऐसे लिखते हैं ना हम लोग. ऐसे लिखते हैं. तो what is the difference between this pronunciation and this pronunciation? Vedika, pronounce this and pronounce this. This is right, this is wrong. Vedika, pronounce this and pronounce this. So first one is mamer. This one, okay. Mare. This one. It's like Mare. Mare. Ma this mare. is mare, or this one is a bit like this. Understood? Hindi में हिंदी समझते हो ना सब कोई? So Difference first क्या होता one है? was right? Mamer. No. जिसमें एगू लगेगा उसमें तुम ए की तरह नॉर्मल ए प्रोनाउंस करोगे. मेर. देखो हम मेर हम लोग नहीं बोलते ना, हम लोग मैं बोलते हैं. मैर. So मैर. it's like mer wala is right, and the other हाँ, one was mer wrong. wala is So right. I was just pronunciating the correct one, mamer. हाँ, so what I am saying is that this is समझ पा रहे डिफरेंस एगो के बीच में रोहन? Yes. कि जब ये वाला लगेगा तो ए बोलोगे तुम. मेर. मे. जैसे हम लोग मे वर्ड बोलते हैं ना, अप्रैल मई जून, ये मे बोलोगे. बट अगर ये लगेगा तो मैं बोलोगे. मैं ऐसा बकरी करता है तो मैर. तो दिस इज द डिफरेंस. तो यहाँ पे थ्रे बिया में वी डोंट से त्रे बिया, वी से थ्रे और थ्रे बिया. सो ये डिफरेंस आता है बिटवीन दीज टू different accents. Okay, Sir? coming back to the sheet. Sir, please repeat the auction name. Means first Name. one means This is ego. And if I am writing in this way, which is used in thre, or in all the relationships we use this, like my mother, mère, brother, frère, father, père. Okay, in all the relationships we use this one, not this one. So this one is grave. I think this is the spelling, grave. Understood? So in the relationships like my mother, my father, my brother, we are using this word only. Understood? Yes, sir. Coming back to that sheet, 1 second. So is this clear now? Look at the second verb. I will just read it very quickly. Acha, Rohan, look at the second word, which is prendre. Prendre means to take. Okay. Rohan, read the first column, the present column. Present tense wala column. Ja prendre. Ja hoga, ja. Ja. Ja prendre. Prond. Ja prendre. Prond. To prendre. Prond. Right. Prendre. To prendre. Tu nahi, Il tu. est. Tu. Tu. Tu prond. Okay, then. Il prendre. Elle Or elle prend. prond. Okay. or prendre. Oh. Nous prenons. Vous prenons. Prenez. Prenez. Il prenait. Elle Now, prenait. il will be the last one. Will be prawn. Is ent ko pronounce mat karo. Do not pronounce the last three
alphabets. Do, not once it becomes prawn actually. Okay. So this means I take. Like if you have to say take matlab, let me just 1 second, just write a sentence. Like if you have to write a sentence like I take, suppose if you want to say that I take अगर तुमको लिखना है something like I take breakfast. Okay, I take breakfast in the morning. I take breakfast in the morning at 9 a.m. So let us try to translate this. I take. Okay, so it is present tense. So we write je, and then je के साथ क्या आता है? PRENDS आता है, right? So je prends PRENDS. उसके बाद ब्रेकफास्ट का विवान बोलो. Your turn comes. Breakfast याद है? Yes, sir. It is something like déjeuner. Sir, I remember the Déjeuner spelling. is lunch. हाँ, वो लंच है. ब्रेकफास्ट है छोटा लंच. छोटा को क्या बोलते हो Oh, फ्रेंच में? हाँ. Petit. I forgot the pronunciation. PETIT. Petit. हाँ. ठीक है. पति And déjeuner पति बोलेंगे is इसको. पति दजनो माने लंच. तो ब्रेकफास्ट इज बेसिकली छोटा लंच. तो इसको ऐसे लिखो छोटा लंच. पति DEJENEUR. ओके. पति दजनर. पति बोलोगे इसको. पति दजनर. और फिर इन द मॉर्निंग हो जाएगा. इन के लिए दो नहीं लिखोगे, जस्ट इन द मॉर्निंग के लिए बस मॉर्निंग बोलो विवान. मॉर्निंग का क्या होता है जल्दी से बोलो. yes, Morning. sir. And sir, in that déjeuner there will also be also argue that. उसमें मारे. पहले ये मॉर्निंग बोलो. Yes, friends. क्या मॉर्निंग? मातिन क्या? Mata, sir. Pronunciation will be हाँ. mata. ल माता. MATIN. Oh, Mata. I didn't know the pronunciation. Why not? We have done this word like numerous times. फिर at 9 a.m. At 9 a.m. Sir, it will be A with an graph and 9 will be Nof and hour will be called you something. अच्छा, okay. You try. Shumita, Yes, sir. at 9 a.m. At 9 a.m. you try. At 9 a.m. How do you write this at 9 a.m.? So, कितना time है? मतलब how much time is left? हाँ, होने वाला बस ये. अच्छा, at 9 a.m. at का क्या? जैसे वो तो he told तो at 9 a.m. उसने कहा ना, at का लिए आ लिख दो. So a. 9 is enough. हाँ, AM PM हम लोग नहीं लिखते फ्रेंच में. We write hours. Okay. Nuffer. HURES. Nuffer. We write hours. Suppose if you have to write 9 PM, then क्या लिखेंगे हम? इसको ट्राई करो. धैर्य. So can you zoom a bit? जूम नहीं होता है इसमें. I mean थोड़ा zoom सा अपना zoom कैमरा नहीं पीछे होता कर लोगे हाँ. please. हाँ, Thank देखो जरा. समझ पा रहा है what I'm saying? I take हो जाएगा je prends, then breakfast हो जाएगा petit déjeuner. अच्छा, déjeuner में एक सेकंड तो देना पड़ेगा. पहले एक सेकंड होल्ड
hold a bit. I take, je prends, breakfast हो जाएगा petit déjeuner, यहाँ पे ल लगाना होगा देन आर्टिकल के साथ. In the morning ल माता, आ नफ अर. 9 PM को कैसे लिखोगे? धैर्य ट्राई, शोमिता ट्राई. 9 PM. How many hours are there in 9 PM? You know how many hours are there, na? Like if you start from Yes, midnight, sir. so 12, then रात It's like होते होते 22. 12 plus 9, 21. No, 21. 21. तो 21 लिखो. 21 को कैसे लिखोगे वेदिका? 21 याद है? नंबर की नंबर भूल गए. 20 क्या है? 21 को क्या बोलते हो? तुमको जो पूछ रहे हैं वो तुम बता नहीं रहे हो. जिसे जो पूछे मुझे जिसको So जिस पर जो डाउट है va, मुझसे va, पूछो. वहाँ VINGT, then ET. Yes, then UN. ठीक है. तो बेसिकली इस तरह से लिखेंगे. So we write this va, ours, और right? हाँ राइट, HEURE और S लगेगा बिकॉज ये प्लूरल है राइट. 21 है. अगर 1 आवर लिखना है तो फिर S नहीं लगेगा. इज इट क्लियर हाउ टू डू दिस? सो बेसिकली आई टेक इस तरह से होगा. ही टेक्स लिखना है तो कमिंग बैक टू दैट शीट वंस अगेन. ये कॉपी कर लो प्लीज. य प्रॉन्द ल petit déjeuner, ल माता, आ नफ अर. Now if I have to, I'm removing it, okay. Coming back to that sheet. So look at the sheet. Now look at the third column, which is passé composé. Like I said, the rule is same. If you have to say I took breakfast, तो I took के लिए यहाँ पे पहले ये आएगा और फिर इसका देखो ये जो है पासे कॉम्पोजे का जो वर्ड है वो PRIS है. प्री. अगर you took होगा तो त्यू आ प्री. अगर he took होगा then इल के बाद आ आएगा then प्री. So you have to write the subject and then the avoir and then PRIS everywhere. If I have to say we took, then nous avons pris. Is this clear? Vedika, Shomita, Dharya, Rohan, Vivan. Yes, sir. Rohan, तुम्हारा clear है? You are a bit behind actually relative to compared to other. Yeah, please. अच्छा, then your work will be that you memorize these two charts, Croix and Prond. Only memorize the first and the third column and please copy them down in your French copy. Do it today itself if possible. And So first and the third one is present and past composite. present right? tense and past tense, yes. Présent, Yes. passé composé. Okay. So इसको अच्छे से I hope समझ गए हो. Memorize कर लेना. Especially the first column has to be memorized properly. In the second column, you just need to remember the past participle for croire, which is crew, and for prawn, it is pre. And the rule you remember. तो avoir को मत भूलना. Avoir के बिना तुम्हारा past tense में होगा ही नहीं. And please revise पहले का भी सब चीज जो हम लोग किए हैं quotidien and we have done Sir, that. I have a question. Yes. You have said that passé composé means past participle. No, means- it means past tense. Past But this word, ये जो PRIS is a word. Okay. That is called past participle, or it is a word which actually in French this is called past participle. You just remember this word. Understood? We are not doing it like in English we say I have taken. Yes. So taken is the past participle. But in French we don't say I have taken. We say I took. Okay. Means there Okay, so there have no past participle concept. No. Yes, there is no concept. Concept is different. So here you will not read it as I have taken. You will read it as I took. This is simple past tense, sort Okay. of.
Okay. Acha, Dharya, is it clear? Okay, then you can leave. So I just wanted to talk to you about something. You want to talk to me? हाँ बोलो. Bye. Yes, sir. Okay.